Welcome aspirants, welcome to SRIRAM IAS YT channel in Geography Explained series where we are going to discuss one topic within 20 minutes, and in this series, this is the lecture on the interior of the earth. The interior of the earth is a very crucial topic for GS paper 1 geography, for prelims and mains both. It's an absolutely critical topic on the basis of which multiple prelims and mains question has been asked. The interior of the earth that we inhabit, one of the best planets to be live on currently. Yes, there are plans to colonize the Mars, but till then earth is the best planet that we have. We should obviously know about every possible detail of this planet, and that is why the resource distribution, the earthquake possibilities, the volcanoes, etc. सारा कुछ डिपेंड करता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो इंटीरियर है, वो कैसा है, और उसे जानना समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इन दिस टॉपिक, दिस इज एग्जैक्टली द इशू which we are going to discuss. Before we jump into the topic, obviously the SRIRAM IAS mentorship is absolutely critical for your UPSC Civil Service examination success. So it's a free mentorship. You don't have to do anything, just have to fill a form and you will be contacted by a learned mentor who will take care of your needs, who will guide you. Guidance, the right kind of guidance is the most important thing right now in your stage of life. From where you are and the station, the status later on in your life will depend upon how you progress from here. तो mentorship इसीलिए बहुत ही crucial एक विषय है. You don't have to do anything, just look at the description of the video. There you will find a form, fill it, and then see how beneficial it is. Now, the interior of the earth is divided into many parts. How do you divide the interior of the earth? It's up to either you chemically divide it on the basis of the chemicals which are present, or you simply on the basis of the structure you divide it, mechanically you divide it. So as you can see in the animation, there are 5 important layers of the earth's interior. The first is this one. As you can see, this is the crust of our planet. Then you have this part that is called the lithosphere. Then the third part is the mesosphere. Then this part, the reddish part, is the outer core, and this bright yellow part is the inner core of our Earth's interior. Before I tell you what lies into these layers, how do we know about these layers? हमें कैसे मालूम पड़ा? There are variety of ways through which the scientists understand the interior of the earth, like volcanic activities, like distribution of earthquake, like drilling projects, like meteors और द आउटर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, उसके थ्रू भी हमें मालूम पड़ता है कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है. देन वी ऑब्वियसली हैव ग्रेटर एक्सेस दीज डेज टू व्हाट, टू द सम टोटल ऑफ ऑल, एंड देयर आर सुपर कंप्यूटर्स, वैरायटी ऑफ कंप्यूटेशनल जो पावर है वो तेजी से बढ़ती जा रही है. सो वी अंडरस्टैंड ऑल दीज इंटीरियर विदाउट गोइंग इनटू देम. There is no possibility that you can dig beyond 10 or 15 or 20 kilometers. तो उसके बाद this is just an speculation but which is based in on solid science. तो ये 5 layers ऐसे बताई जाती हैं. Now the interior, to have the proper map through animation, it is very easy, but now comes the picture which has been you will be too enamored out of the animation, but this is also equally important. So this is how we divide the layers. The outermost is obviously the crust where we live, where we construct our homes, where we go for variety of needs that are attained on this particular planet. तो crust से ही mostly हम deal करते हैं. ओशियनिक लेवल पे और कॉन्टिनेंटल लेवल पे क्रस्ट अलग अलग होती है, इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है. टॉप मोस्ट जो लेयर है हमारे प्लेनेट की उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसका जो थिकनेस है ओशनिक लेवल पे अराउंड 5 to 30 किलोमीटर्स होती है. कॉन्टिनेंटल एरियाज में अराउंड 30 to 70 किलोमीटर्स भी बताई जाती है. क्रस्ट से जैसे ही हम नीचे आते हैं तो मैंटल स्टार्ट होता है. अच्छा, मैंटल के कई सारे पार्ट्स हैं. देयर यू सी दिस इज द पार्ट ऑफ द मैंटल, एंड देन यू हैव द कोर पार्ट. आउटर कोर है जो कि एक लिक्विड है, और एक इनर कोर है जो कि एक
सॉलिड है। On the basis of various discontinuities that we have in the layers of the earth, it will become far more easier for you to understand कि इंटीरियर इसका कैसा होता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज द क्रस्ट, उसके नीचे कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। दिस कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। दिस इज फाउंड ओनली इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरियाज में कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी होती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल एरिया में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हमारे क्रस्ट का वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, नीचे वाला बसॉल्ट का बना हुआ होता है, तो वो डिसकंटिन्यूटी कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। ओशनिक लेवल पे ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है मोहो डिसकंटिन्यूटी। दिस इज द डिसकंटिन्यूटी वेयर द मैंटल स्टार्ट्स। अच्छा, मैंटल का जो अपर मोस्ट लेवल है दैट इज बिग मोशन लाइक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे काफी डक्टाइल है, और जो लिक्विड है हम जो वोल्केनोस के फॉर्मेट में देखते हैं लावा या मैग्मा बाहर आते हुए, वो यही इसी वोलेटिलिटी के कारण, इस फेस के कारण बाहर निकलता है। तो जो क्रस्ट और मैंटल के बीच डिसकंटिन्यूटी है, फील्डस्पार एक मटेरियल होता है उसके कारण ये होती है, उससे हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। सो क्रस्ट को जनरली सियाल और सियामा के करके ये जो क्रूशल अबिब्रेशन दिए जाते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम द अपर पार्ट जहां पे ग्रेनाइट होता है, उसके नीचे सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम जो कि बसॉल्ट का एरिया है। मैंटल अपर मोस्ट एरिया है, वो सॉलिड होता है, उसके नीचे एक लिक्विड जो विस्कियस लावा होता है, विस्कियस लावा होता है, वहां पे हम उसको बोलते हैं एथनोस्फेयर, द वीकर पार्ट ऑफ द mantle, that is called ethnosphere. And then there is a solid part of the mantle. उसके नीचे जब हम आते हैं लगभग 1900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर के आसपास गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दिस डिसकंटिन्यूटी इज देयर बिकॉज ऑफ द सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव में दो टाइप अर्थक्वेक की वेव्स के होते हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स में भी पी वेव और एस वेव्स होती हैं। तो जो पी और एस वेव होती हैं उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जो पी वेव होती है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस से भी जा सकती है, जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड से जाती है। तो यहाँ पे एस वेव गायब हो जाती है बिकॉज दिस इज पार्ट बट द लिक्विड कोर इज देयर। इमेजिन करिए 33% ऑफ अर्थ जो मास है वो यहाँ पे लोकेटेड है, उसमें भी हैवी मेटल्स जो कि लिक्विड फॉर्मेट में है सर्कुलेट कर रही है अराउंड द सॉलिड कोर। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिकॉज एस वेव डोंट कम बैक आफ्टर इट। उसके बाद है हमारे पास अराउंड 3150 किलोमीटर पे लेहमन डिसकंटिन्यूटी। दिस डिसकंटिन्यूटी इज देयर बिकॉज नाउ द पी वेव यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर्स एंड लुकिंग इनटू primarily the shadow zones of the earthquake waves, we have described, these are the names of the scientists mostly, Conrad, Moho, Gutenberg and Lehman discontinuity. इंटीरियर्स जो है अर्थ का बहुत ही क्रूशल है प्लेट टेक्टोनिक के लिए, वोल्केनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, जो सीस्मिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए। वाई इन सम एरियाज देयर आर मोर सीस्मिक एक्टिविटीज, जैसे हिमालयाज की बेल्ट है वहां सीस्मिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक वहां पे मूवमेंट हो रहा है। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? दीज आर इरेगुलर शेप्ड ब्लॉक ऑफ रॉक्स जिनके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन मूव करते हैं, और वो हमारा जो एथनोस्फेयर है उससे जुड़ा हुआ विषय है। तो एथनोस्फेयर से जुड़ा हुआ ये जो विषय है ये निकल के हमारे सामने आता है। ये जो एथनोस्फेयर है एज इफ कि कोई मैसिव सॉलिड रॉक है और वो फ्लोट कर रही है एक लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है दिस इज द कोर ऑफ द सीस्मिक एक्टिविटीज। द सीस्मिक जोन्स एंड द वोल्केनिक जोन्स दे आर हेविली related with the plate tectonic, and plate tectonic itself is a byproduct of the nature of the earth's interior. हमें जानकारी मिलती है, साइंटिस्ट जो स्पेकुलेशन करते हैं वो हमेशा सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बिल्ट होता है। सो वी गेट टू नो थ्रू द earthquake waves, we get to know through the shadow zones, we get to know through the drilling projects, we get to know through the meteoroids. इवेंचुअली मैग्नेटोस्फेयर जो है अर्थ का वो भी हमें बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या मौजूद है।
It has always been a matter of speculation. It's just fascinating. Just imagine that you are standing someplace or sitting someplace, just look down and imagine that down hundreds and hundreds of kilometers, there is absolutely liquid outer core. उसके अंदर एक solid core है. So अर्थ का जो formation है 4.6 billion years ago, the solar system was built. Around that time, and after millions of years of evolution, we have arrived at a situation jahan intelligent species can look into this brilliance of the nature that it is there. कंपोजिशन हमारे लिए जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि दिस इज द एरिया वेयर वी लिव. सो अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. मोस्टली यहाँ ऑक्सीजन है 46%, सिलिकॉन 27, देन एल्यूमिनियम 8.1, मैग्नीशियम 1.5, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. These things are present on the earth crust. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो माइनिंग का एस्पेक्ट है, इसीलिए बहुत ही क्रूशल हो जाता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारी अंडरस्टैंडिंग से अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो इसीलिए प्रीलिम्स में और मेंस में इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है. आपसे बार बार अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द earth and the related topics like earthquakes, like plate tectonics and formation of the landforms. That is also a related matter, and the distribution of the minerals and important minerals, plus these days critical minerals भी काफी critical हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे एक element आता है. That is how we go through understanding the interior of the earth. And I hope all of you got the topic, the gist of the topic. And in this geography short lecture series, we will continue to explore new topics every alternate day, most likely, in a precise manner with a lot of brevity, which is required for the examination. And hopefully that this series will be very useful for you, at least in understanding the issues of the geography, which is seen as a very boring subject, unfortunately, but it is very fascinating if you are being taught in a proper way. I'll meet you again with a new lecture on this series. Thank you for giving me your time.